So this is known as cope elimination. लिख लो उसका नाम cope elimination reaction हो गई. क्या करते हो उसमें? This How base do you spell that? COP. Oh. Now this O minus is present here. That's a base. अब आप जाओ यहाँ पे. Just see minimum carbon alkene कौन सा है? 2 कार्बन है यहाँ पे. Sorry, 1 2 carbon, 1 2 3 carbon, 1 2 3 4 carbon. So figure out which is the smallest alkene for you. Can I say this one? Yes or no? Now I'll go to alpha position. I'll go to beta position. Beta position, pick this hydrogen. Base will go, take H, create double bond. This is free. Is it clear? Base will go, pick hydrogen, create double bond. This is free. Please draw. How many of you can draw the product as you get a double bond as an alkene, which is ethylene. Nitrogen has got OH on this. As it is, you just copy this part. As it is, you copy this part and keep lone pair. This is my answer. Kar loge? Write for line for it. We draw minimum carbon alkene for this. Minimum carbon alkene. How will you decide minimum carbon alkene? By looking at which carbon chain is shortest chain. Doable? Try the next question, please. You want clear? So I didn't understand. Could you explain it again? Yeah. This is N plus. Go to alpha position. Go to beta position. Take this H. Let me ask. Whether you watched that 2.5 hours which you missed? You want? Oh, so No. Then can I request you to please attend the are you available for in regular B1 or B2 slots? when, sir? Huh? When? Which day? Monday, Wednesday, 5 to 7. For how many classes? Monday, Wednesday, 5 to 7, at least this week, coming week. So I don't know, so I might have to go to Narayana. Or 5 to 7, you are not available. Monday, Wednesday. 5, 6 o'clock I might be here. Yeah. No, 6 o'clock will be late. Monday, Wednesday, So I'll 5 to 7. message you, sir. If I'm... Or at least you watch the recording, no? At least. Yes, I watch, sir. I Yeah. was not well. That's Watch and then I think you were supposed to do this and discuss with me, right? But Yes. the other day you were not well, right? When No, you came sir, in. yeah. Okay, no problem. No problem. Please watch it now. Okay. Now this is alpha position. This is beta position. See, there is a hydrogen. You will always capture this hydrogen, create a double bond. This is free. Okay. Is it fine? Yes, sir. So what is the product? You get a double bond, C double bond C. Yes. The bond broken here. Nitrogen will have a lone pair OH. And then just copy the remaining things. That's all. Oh, These are our answers. Kar lenge? Come to the next question. ETO minus Na plus and heat. This is sodium ethoxide. It's a strong base. And fluorine is a very poor leaving group. It's not a great leaving group, right? We know that. Okay. Now, whenever you have this kind of situation, you always take H from terminal because F is not very much keen that you take from here and make a double bond or any substitute thing because it will not go easily, right? So you will try to take H from this place. With the help of this, you push and then F is out. What kind of answer you can get? You can get the answer something like this. So will the other one also form? The one butene, will it also form? More substituted this one? Yeah. Not in case of fluorine. So write one line for it. When the leaving group is bad, or when the base is bulky. When the leaving group is bad or when the base is bulky. So what will the byproduct be in this reaction? Byproduct as in along with that, what will come out, right? Yes. Yeah, so along with that, see, OET minus is taken it, so ETOH and Na plus F minus will form NaF. Okay. So when base is bulky or when the leaving group is bad, terminal attacks are more preferred, right? Terminal attacks are more preferred. आप H यहाँ से लेके डबल बॉन्ड बना के आप रिएक्शन कर जाओगे, ठीक है? और उसकी बहुत सारे डिस्कशन आगे भी करेंगे, but try this question first. So could you explain the mechanism for the 12th one also? One second here. So could you explain the mechanism for the 12th one again? 12th is simple E2 elimination, nothing else. I'm not doing any other mechanism. Okay. It's a simple E2 single step mechanism.
synchronous removal of H and F, right? Same time. This question, how will you attempt? Cl is up, H is below. So Cl it will is up, form benzene, right? it will form benzene. Whose answer is this? Arjun. Okay. How you get that? H is Because behind. there's excess, so So base will oh, come. so H will leave. Yeah, sorry. So 3 CLs will still be there though. हाँ 3 CL will still be there. तो एक CL आपका एक निकल गया, एक CL उड़ गया. फिर आप क्या कर सकते हो? इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन से यहाँ से उड़ा दो. इसका H नीचे, CL ऊपर, H लिया, CL उड़ा दिया. And then do the same thing again, right? So you should end up getting this kind of result. Gia, is it clear? Can you understand this part? Base comes, take H, form a double bond, CL is out. Elimination आपने कर रखे हैं, right? You get it, Gia? I understood. Understand or not? Yes, sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, Sure. sir, I understood. Very good. So base will come, take H from below, create a double bond, CL is out. Next base will come, take H from below, create a double bond, CL is out. Base will come, take H from below, CL is out. So you'll form this kind of structure, very stable structure. Draw कर लीजिए. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी. 13th question. All right. Go down. Next question. So as I mentioned, stereochemistry is something which is really important if you want to get score. Stereochemistry तो आनी ही पड़ेगी, है ना? So will this form anything? आप बताइए क्या लगता है? ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में क्या लिख के आओगे? Sir, I don't think so because hydrogen and chlorine are at the same this thing. What should be answered? I'm not sure, sir. I think no reaction, but I'm not sure. Vihan is telling no reaction. Yuvan, Vihan, Yuvan. राइमिंग जा रहा है. इहा जिया, ये भी राइमिंग जा रहा है. अर्जुन बच रहा है बस. अर्जुन अनुज ये राइमिंग चला जा रहा है. पूरा राइमिंग क्लास है. हाँ जी अर्जुन जी क्या आंसर होगा? I'm not sure. युवान, Not sure, sir. इहा, जिया. I also think no reaction. Answer is no reaction. लिख लीजिए. Answer is no reaction. Reason? See, this is again a fundamental question on concepts, right? So if your concepts are clear, you can always get correct answer. H and Cl should be opposite to each other. आपका H और Cl same side में आ रहा है. हो ही नहीं सकता कुछ यहाँ पे. Okay? Anti-periplanarity. Write this word. Anti-periplanarity is absent. Then we can't do anything. Okay? Anti-periplanarity याद है ना? अगर आपको इधर से निकालना है रिमूवल, सो ग्रुप इधर पे ऐसे 180 के एंगल पे अरेंज होना चाहिए, राइट? सो इन दिस केस इट इज नॉट, सी दिस H इज बिहाइंड. आप ये H लेने गए हो, अब Cl भी आपका सेम ही साइड है. हाउ कैन यू रिमूव? इज इट क्लियर? Idea is H is taken from this side, Cl is removed from other side, not from the same side. Gia, is it clear? Yes, sir. Okay. Coming to the next question. ये कर लिया आपने. E1cb mechanism. लिख लो एक बार E1cb mechanism. Sir, can you do some more problems on E1? Yeah, we'll do more questions also. But first, let's write down E1cb mechanism. E1cb mechanism. Okay. So E1cb
लिख लीजिए E1cb mechanism. Now in E1cb mechanism, how will you recognize the mechanism? So it's like base will come, okay, base will come, grab H और grab thing and then form carbon है, C negative बनाता है और ये C negative push करके X को बाहर निकाल रहा होता है, right? Base will come, take H, make carbon ion and then you remove this and with the help of carbon ion you push and then X is out. So if you recall, I have discussed three scenarios. One, base comes, takes hydrogen, create double bond, X is out. Base comes, takes hydrogen, create double bond, X is out. Base का आना और X का निकलना ये synchronous हो ऐसा. Base ने H लिया और X को निकाल दिया in single step. That is called E2. that is called E2. E2. That is called E2. X goes out first, forms a carbocation, and then base comes and takes H and form double bond. Then E1. great. Base takes H, forms negative charge, then negative charge pushes, and then X is out. Then E1cb. Which So, is this. but the leaving group has to be poor over here, right? Yes, leaving group should not be good in this case. Leaving group should be poor. And you can also see the presence of electron withdrawing group like CF3, like NO2, like CH2NO2. Okay, these kind of groups presence on this place where you are creating minus charge will improve the chances of reaction. Are you understanding this part? So in E1cb, what all we observe? Point number one. E1cb, what all we observe? One, base takes H first. Leaving group is not excellent, so it will leave later. Okay. When your base comes, takes H, minus charge is formed. That minus charge should be stabilized with the help of carbon ion. Negative charge आपको stabilize करना है. You need some kind of minus charge stabilized with the help of electron withdrawing group. Sorry, not carbon ion. That is called carbon ion stabilized with electron withdrawing group. So presence of CF3 kind of structure will be there. So let's say you come across a question where I write CF3 this and then F kind of group and then let's say this is given to you some H and some very strong base NaNH2 minus. क्या करो? इसको लेके जाओ, H निकालो, take minus charge, push and F is out. कर लेंगे. Is it clear? So first thing is very strong base will be present, electron withdrawing group will be present, and the leaving group will be poor. So, ये will सारी it बातें form a होंगी. double bond? It will form double bond. Yes. So second step में आप क्या बना दोगे ऐसे double bond form कर लो. Please write down. Note down this. Is it clear, everybody? Gia, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yuvan, Yes. Iha, Vihan, and Arjun. I think these three students are doing it from earlier classes. Yuvan was also doing. Yuvan took a small break for one day. That's why I'm asking Yuvan. And Gia has like shifted to this batch because of her classes or other time slots, right? So Gia, you will have some gaps here. We will do it separately also. Don't worry. Okay, wherever gaps are there. But I think other batches will not suit you in the given case. But I think that is for 1 month, right? After that, they will change the timings and go to the normal, right? No, sir. They're saying it's a permanent change. It's a permanent change. Yes, sir. Why are they doing that? Like, okay. And they have any other batch options for you? You have any other batch which you can join? Sir, I can join 7 to 9. 7 to 9. But for 7 to 9, again, 5 to 7 will not work for you, right? Yes, sir. Because 7 to 9 is offline, right? And 5 to 7 will be, how do you do that? That's also a problem, right? I think then this option will suit you, the weekend option. Okay. Yes, sir. So in the first reactant, like on the carbon with the electron withdrawing group, does it have to be H at the bottom or can it be R also? It can be R also. It's okay. 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 But Okay. H will be better. R will be Yes, like sir. slightly poor. You know that. Okay. So it's a two-step process, two-step mechanism. Carbon ion as an intermediate. No rearrangement. No rearrangement. कोई भी rearrangement नहीं करोगे आप.
Rate is written like this. अब इसकी एक summary में दे दो, quick summary आपको. Factors affecting. So let's say if we talk about E1 reaction, E1 reaction is good for 3 degree followed by 2 degree followed by 1 degree because आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, right? तो E1 कब अच्छा होगा? Just see this. E1 is good for which case? 3 degree followed by 2 degree followed by 1 degree. E2. E2 is 3 degree, 2 degree, 1 degree Saytzeff product. E2 elimination पता है मेरे को 3 degree के केस में क्या बनेगा? Saytzeff product. And E1cb, we already know that E1cb needs electron withdrawing group presence and leaving group should not be very good. These are the basic criteria, right? So leaving group should not be great in E1cb. Nature of base, be it E1, E2, we need strong base, but E1cb we need very strong base. Okay, very strong base. Solvent in E2 and E1cb we can't use polar protic solvent. Polar protic solvent आएगा तो आपका reaction होना मुश्किल हो जाएगा and temperature should be high for all the cases, right? I think this basic understanding all of us have. We have discussed this multiple times. In GOC also have discussed. Okay, it's not like you're doing it first time. You've done it earlier also in GOC, right? So the basic idea of these reactions should be there. Sir, can you just show the mechanism again once, please? For which case? Sir, for E1cb. Yeah, Just above. yeah. So base grabbing edge. यहाँ पे आप edge लिख लो. It's a base grabbing edge. Formation of a negative charge on this place. Okay, which I am calling carbanion, and the next step that negative pushes X is out. कर लेंगे. So the kinetic isotopic effect that we had stated in the other. Your voice is not clear. Your voice is not clear. Is it audible now? Perfectly audible. So the kinetic isotopic effect that we mentioned in the other eliminations, what will it be? Kinetic isotopic we have not discussed yet. Yeah, we'll talk about it. Yeah. Sir, What would happen in this? Like, what would happen? Kinetic isotopic effect. What will happen as in? So is it observed or not? Yeah, it is observed. In this case, it is observed. Yes. in the second step on the carbanion, there's nothing below, but then in the third step, after the electron withdrawing group leaves, there's a group that attaches below also. No. See, these are two branches. That's Y only. No, same Y you can copy here. Y तो कहीं भी नहीं आ रहा ना. ये Y लिख लो आप. Oh, okay. Okay. If you're out with that, just write Y. Okay. कर लेंगे reaction. Any issues? Any difficulty with this? So just let me give you the summary of, again, all the three things. E1 requires carbocation formation. E2 is backside attack single step reaction. E1cb form carbanion, right? U1 is it okay? E1cb we have a very strong base. E1cb we have a withdrawing group which can stabilize your negative charge. So all those things you will observe in E1cb. E2 is a synchronous reaction where base comes, takes H and X leaves simultaneously, synchronously. Okay. And E1 is when X goes out, forms a carbocation, then reaction happens. That is why you have chance of carbocation formation. So polar protic mediums can support you in that case. But polar protic mediums will not support you if you're doing E2 and E1cb because we don't want to do that. Okay. We don't want to form any carbocation or something. Okay. Now, after telling all these points, just note down quickly. Very good leaving group, very good leaving groups, good leaving groups, and bad leaving groups. When I say very good leaving group or excellent leaving groups, N2 plus will go out as nitrogen, OH2 plus will go out as H2O. They're all neutral molecules, right? So when they go out, that's the best case scenario. What are bad leaving group? Which are coming from strong acids or acids. HF, water, ROH, RSH, they're not very easy to go. And good leaving group like IBRCl and all those things. So you written high and very good and good. Yeah, I is good also, I is very good also, isn't it? Like I is a decently placed in both the sequences, right? Complete this.
Yuan, you're there with us? Yes, sir. Okay. Please take your time, right on So in this. the very good leaving group list, what's the last like ONS, nitroside. Just place of CH3, if you put NO2, NO, they're called nosilate, nitrosilate, prosilate, remember? So those kind of groups. Note down. कर लेंगे कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई समस्या कोई तकलीफ No. ओके नाउ एक लिस्ट बना लेते हैं बेसिस की लीविंग ग्रुप की लिस्ट आपके पास ये रेडी हो गई ठीक है एक बेस की लिस्ट बना लो few bases NaNH2 is a base okay lithium so sodamide sodium amide then lithium amide LiNH2 is a base draw this compound LDA lithium diisopropyl amine okay lithium diisopropyl amine what is isopropyl isopropyl is this branch what is diisopropyl when I have two such branches okay with a minus charge and Li hanging next to it this is lithium diisopropyl amine okay tertiary butoxide TBuO minus you'll find these terms written in exam TBuO minus that is called tertiary butoxide it's again a bulky base but strong base this is a bulky base this is a bulky base okay LDA लिखा हो मिल जाए अब LDA का बता see they will not tell you what is LDA you should know they will not tell you what is TBO minus you should know okay is it clear so examiner may or may not give the whole structure it is right LDA अब LDA आपको पता ही नहीं तो फिर क्वेश्चन वहीं पे ओवर हो जाता है right so you should know these things these are all bases these are bulky bases these two specifically these two are bulky bases now bulky bases picking H plus from less sterically crowded position. They will not go in the crowd and pick H. They will go from terminal corner and pick H. For example, आपके पास यहाँ पे let's say Cl लगा है इस पे कुछ branches कर दिया आपने right? So you will not go to this place. You will just go to the corner position, take H, create double bond and out. Bulky base will not be able to give you Saytzeff kind of answer because it's more interested in doing the reaction fast, right? Because that can't approach to the core. Is it clear? तो ये एक point दिमाग में रखिएगा. Bulky bases picking H plus from less sterically crowded locations. So it's the same thing as Hofmann rule, right? Yes, correct.
is the same thing as Hofmann rule. We can say Hofmann product will be formed. He has it clear. But what about this kind of base? These are not bulky base, so they can go and do the things, right? But these are very strong base. So generally you will see these kind of bases in which reaction? E1cb. So what do you see in normal E2 reaction? You will see bases like CH3O minus Na plus, bases like C2H5O minus Na plus. ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा E2 में. Is that clear? कर लोगे? Note down these bases. Et3N, alcoholic KOH, RONA, tertiary butoxide, LDA, LiNH2, NaNH. So these are all bases. ठीक है? अच्छा जी, solvent पे आ जाए. E2 polar aprotic solvent is desired. E1 TPS is okay. Temperature condition. Thermodynamics of this is delta G is delta H minus T delta S. You know that delta H is more than 0. Why more than 0? You're supplying heat, right? Delta S is more than 0. Why? Because entropy is increasing, right? You're breaking and all those things are happening, right? So T should be higher value. Higher T will make sure that delta G is a smaller value. And smaller delta G means a feasible reaction. Yes or no? J. Delta G jitna kam hoga, reaction utni hi feasible hogi. We know all these things, right? So temperature, high temperature is reasonably good for all the eliminations. So basically it's like a matrix where we have SN1, SN2, E1, E2. Sunna the answer. If you are doing SN1 and E1, they're competing with each other. But when I increase the basic nature of base, basicity is improved. That will be towards E1. Similarly, SN2 can move towards, if high strong base is given, basicity is more towards E2. SN1 versus SN2, we have done all research, right? 3 degree idhar hoga, 1 degree udhar hoga, all those things you already know. Bridged, aryl, vinyl, dono hi nahi denge, right? When it comes to E1 versus SN1, basicity versus nucleophilicity is the criteria. If you have a good nucleophile, SN1. If you have a good base, this is E1. Let's say I give you aqueous KOH and alcoholic KOH. So aqueous KOH will be interested in substitution. This will be interested in elimination. Understand? So what kind of bases, what kind of nucleophile are used, that will decide your answer. We have done one question earlier, OCH3 minus and SCH3 minus. With this, major answer for a 2 degree attack was elimination. With this, major answer for 2 degree attack was substitution. So आप nucleophile check करो अपना. Nucleophile कैसा है? Nucleophile अच्छा है, base अच्छा है, right? And base versus nucleophile, how will you differentiate? Base is interested in grabbing H plus. Nucleophile is only interested in supporting C plus or positive location. Is that okay? Can you understand these pointers? Yes? Can I remove this? Yeah. Is there a better nucleophile would like incline toward the substitution reaction, right? Which one? Better nucleophile will be towards substitution, yes. And strong base will be towards elimination. So again, I'm giving a summary of E2 versus E1. 3 degree, 2 degree, 1 degree, idhar bhi chalega. 3 degree, 2 degree, 1 degree, idhar bhi chalega, right? It's not opposite to each other. Like SN1, SN2. SN1, SN2 की तरह से opposite नहीं होता है यहाँ पे. 3 degree, 2 degree, 1 degree, elimination. 3 degree में ही better होगी, 1 degree में नहीं होगी, right? That you already know. RI, RBR, RCL, this is again same for both the cases.
This case strong base, this case weak or mild base is okay. When I say strong base, alcoholic KOH, NaNH2, tertiary butoxide you will use. Okay. Polar aprotic solvent, polar protic solvent, heat, heat. Fine. Even reaction moves with formation of carbocation. Just keep this in mind. That's why they are mentioning weak base. Because you have to form carbocation, not immediate removal. Is it clear? Arjun, is that okay? Any questions, anyone? Please note down all the points. Yuvan, is that okay? Jia? Yes, sir. Great. अब देखो ये तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई कि यार ऐसा होगा, ये रिएक्शन होगी, ऐसे करना है, ऐसे करना है. But having said that, unless until you solve problems and apply these things in questions, you will not get confidence, right? So when you really want to understand that what is SN1, SN2, E1, E2, कौन सा कब होगा, किस केस में होगा, किस में नहीं होगा, so that picture will become clearer when you solve more and more questions. If you recall SN1, SN2, we have solved a lot of questions, then we become very confident, right? You ask me any question, you can answer, right? So same thing you have to do in E1, E2 also. You do a lot of practice. We'll do that. Can I remove this? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये डिस्कशन अभी नहीं चाहिए. लिखिए dehydrohalogenation examples. Dehydrohalogenation examples. अभी होता क्या है dehydrohalogenation भाई? What do you mean by dehydrohalogenation? Okay. Sir, hydrogen and halogen is removed. Correct. D means removal, hydro means hydrogen, halogenation means X. Okay, halogen. So removal of HX is called dehydrohalogenation. So look at the first example. You had alpha beta position and a chlorine here, right? Alpha position पे chlorine and beta पे ऐसा structure बना हुआ है. So what can happen? If you want to take a base, can I say base will come take this H, create a double bond, CL is out. तब तो कर सकते हैं. Easy reaction. Elimination हो जाएगा. Now check this case. Do we have any H here? Yes. Base will come take H, create a double bond, HCl is out. ये बन गया. कर लोगे second case. Third case. Base will come take H, but H तो है ही नहीं. There's no H because these are 3 carbons here. Can you take any H from here? So answer is no reaction. Okay. Next case. समझ में आ रहा है तीनों एग्जाम्पल? अर्जुन, Iha, Yuvan, Jia and Vihan. Next case, pH is here, Cl is here, right? So 1H is here, 1H is here. अब कौन सा लिया जाए? If you take here this वाला H, ये double bond बनेगा, Cl is out. I get double bond which is in conjugation with pH. If I take this wala H, base will take H, double bond, Cl is out. I will get double bond at this place, right? These are two different situations or scenarios. ठीक बात है. तो आपका ये भी आंसर बन सकता है और ये भी आंसर बन सकता है. कर लेंगे. कोई कंफ्यूजन यहाँ, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वो सॉल्व करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए. Which is major? Major is this one because this is in conjugation with pH. So pH ऐसा दिखेगा. You have a double bond, so it's in conjugation. Conjugation समझते हो? Alternate double bond connect हो गया ना? How many of you understood all 4 questions? Raise your hand. चारों समझ में आता. Note कर लीजिए quickly. Yuvan, is it clear? Yes. So the third one is not possible because there's no Third one is not possible. There's no beta hydrogen. hydrogen available. Yes, beta H is not available. Good. Can I go to the next question? Next question is this. Try. एक बार आप खुद try करें. ये given है, base use करोगे तो क्या होगा? Stereochemistry के साथ draw करना please.
So, can you repeat the question? This is the question. You are heating with base. Sir, I can only see the reactant. I can't see the base. हाँ, so base आप मान लो कि normal B minus लिखा है मैंने. Okay. Yeah. So that's just Cl and H that are like towards, right? हाँ. So the other one does not have a Cl, right? It's just Otherwise nothing written, so carbon हो गया ना उधर वाला. इधर Cl लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे कार्बन होना CH3. Right. See, in this case, you can take H from this place, create a double bond, Cl is out. Or you can do it from this side, create a double bond, Cl is out, right? Both the options are available. तो आपको ऐसे दो structures दिख रहे होंगे. Fine. Any difficulty in this? Any issues in this one? कर लोगे? अब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज है नहीं है? चेक करें. See, if I talk about this position, इससे दो कार्बन अवे एक डबल बॉन्ड है, इधर से एक दो तीन कार्बन अवे एक डबल बॉन्ड है, राइट? So this second position, this third position double bond, and there will be one hydrogen also sitting here. So can I say it's a chiral location? Chiral location होगी, तो ये प्लस माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है. All right. Any issues? Remove this is not needed. ठीक है, this is your answer. Next question, had it been like this, your answer will be like this. Doable? Remove H, Cl, and then form a double bond, left or right, both options are possible. कर लेंगे, note करते जाइए. If this is the question, what will happen? So see, in this case, you will take H from below. So in the first H one, will which one's major? हाँ, मेजर ये वाला मेजर है. So the after that, कोई major नहीं. These both are 50-50. both are exactly same. No major, no minor. Okay. Okay. Now in this So one, it's sir, the first one is a racemic mixture, right? yeah, this is also racemic. This is also racemic. Right? Yes. Yeah. Now look at this one. If H is here, I'll take the bottom H, remove the Cl from top. So you get a double bond at this place. ऐसा एक structure मिल सकता है आपको. ठीक बात है. और एक structure में आपको ऐसा structure मिल सकता है. दोनों ऑप्शन कर लोगे. फिर से यहाँ पे आपको chirality विजिबल हो रही है. चेक कर लीजिए chirality है कि नहीं है इस केस में. Check. Yes. This is a star because this root and this root are different. This is CH3, this is the hydrogen. Same thing here, here, and one hydrogen. Can you observe chirality? Kindly note down. सारे केसेस नोट कर लो फटाफट स्पीड में एकदम.
देखो जितने केस आप देख लोगे उतना ही इजी हो जाएंगी चीजें, बिकॉज यू विल हैव पर्सपेक्टिव एंड आइडिया कि भाई कैसे रिएक्शंस होती हैं। कुछ आपको नया नहीं मिलेगा उसमें। whenever question comes you have already seen, you can just quickly mark option, go to the next question, right? But if you have not seen these cases, आपने सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री में काम ही नहीं किया हुआ है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती है। स्टीरियो केमिस्ट्री यू कांट इग्नोर। चल इसी बात पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जेई मेंस में आया हुआ है कल परसों परसों शाम का क्वेश्चन। लिख लो, देखिए कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आगे। राइट, कंपाउंड C5H10, compound C5H10, C5H10 cannot show Bayer's reagent test. Compound C5H10 cannot show Bayer's reagent test. Find out its mono-bromo derivatives, structures, or how many structural possibilities of mono-bromo derivatives you will get for this compound. Answer please. Sir, 14. ये डिस्कशन है बेटा। 14 है आंसर पक्का? Yes, sir. Can you tell me how? No, won't it just be one? Sir, all ring structures are possible. So then with that you No, form but what? all the hydrogens in that ring will be identical, right? C5H10. Sir, you'll get 5-member, 4-member, 3-member rings. How many unsaturations are there in C5H10? Or 1. C5H10. 5 plus 1 minus 10 minus 0 by 2. So one can be a 5-membered ring, one can be a 4-membered ring with 1 CH3 hanging on this. 3-membered ring, 2 CH3s together, 2 CH3s separate, 2 CH3s in this form. Arjun. And then you have to write ABCD. First case, as Arjun said, भाई सारे same हो गए, तो 1 हो गया। But इसमें तो अलग होंगे। ABCD लिखना आता है, ये हमने करा हुआ है। यहाँ पे B लिखूं क्या इस पॉइंट पे, या छोड़ दूं? I'll just write A, B, and here, right? There's nothing here because there's no hydrogen there, right? This is A, this is A, this is B, this is B, this is C. This is A, this is B, C, B. कितने होंगे? Count A, B, C. जहां जहां जो भी लिखे हुए सारे काउंट कर लो, आंसर अपने आप आ जाए। कितने लिखे हुए हैं? 14. आंसर इज 14। कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए। जेईई मेंस की भी थोड़ा सा फ्लेवर तो ले लो कि जेईई मेंस में चल क्या रहा है आजकल। तैयारी करो एग्जाम की, पता ही नहीं एग्जाम में क्या आ रहा है, तो फायदा क्या है। सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस एग्जाम। ये सब मेंस के क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं कुछ भी, मेंस का है। एडवांस आ गया तो एडवांस भी सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लो मेंस का। एन एल्कीन, 1 mole alkene, sorry, 1 mole alkene reacts with 8 mole of oxygen. 1 mole alkene reacts with 8 mole of oxygen. Find out number of carbon plus hydrogen atom in that alkane. फिर ऑप्शन दे दो, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको खुद ही पूछ रहा हूं। Try. 1 mole alkane react with 1 mole alkane react with 8 mole of oxygen for complete reaction. Find out number of carbon plus hydrogen atom in alkane. कर लीजिए।
Find out number of carbon and hydrogen atom in alkane. Vihan, 7 p.m. 8:30, right? Vihan. Yes, sir. So is it 16? 16 आपका आंसर आ रहा है? नहीं भाई, गड़बड़ कर दिया आपने. Sir, can you repeat the question? I don't think I took down the correct question. Question is, there is an alkane. Sir, alkane or alkene? Alkane बोला बेटा. Sir, I did alkene, sir. Alkane बोला, alkene तो क्या होगा? So just repeat the whole question again. There is an alkane which react with 1 mole of alkane react with 8 moles of oxygen. Find out number of carbon plus hydrogen in that alkane. कितने लोगों ने alkenes only alkane को हाथ उठा दे? Alkane है alkane. Sir, इसके आंसर 20. भाई जे मेंस लिखना है हमको, फिर एडवांस भी लिखना होता है. ऐसा मत करो, इधर पढ़ते जा रहे हो उधर अटकते जा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना. सिंपल सा तो क्वेश्चन है. The number of carbons plus hydrogens you have to find. 17. So 17, yeah. Answer is 17. C5H12. Yes, sir. C5H12 बैलेंस इक्वेशन आएगी. C5H12 plus 8O2 gives 5CO2 plus 4H2. करके देख लो. ये गलत नहीं हो सकते क्वेश्चंस ऐसे, राइट? ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए इस बार. ये अब गलत तो नहीं कर सकते. करेक्ट. चलिए वापस आ जाते हैं अपने काम पे. ये हो गया. ये नोट कर लीजिए. ड्रॉ दी आइसोमर ऑफ 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन दैट शोज द लोएस्ट रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन. मतलब ना के बराबर. तो ये वाला बना लोगे. अभी ऊपर किया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. While lowest rate of dehydrogenation, we can't remove HCl, no, in this case. Okay. So you can draw the structure. You can mark the answer. Can you recall this example? Abhi, here. It's the same thing. कहाँ किया? ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे.
नो रिएक्शन लिखा था, उसी बात को दूसरे तरीके से लिखा गया है, डिफरेंट वे। ओके, बल्की बेसिस का आपको आइडिया हो चुका है। बल्की basis will give you which product? Hofmann elimination. Smaller bases will give you Saytzeff product, right? Now see the comparison. अब बहुत ध्यान से समझना, ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. If we write Saytzeff versus Hofmann and we use OH minus. Now OH minus is not a bulky base, it's a very small kind of base, right? Saytzeff answer is 85, Hofmann comes 15%. आपने बेस चेंज किया, OAT minus 75 25 हो गया. You use the bulky base, 35 65 हो गया ratio. You use even bigger base, 12 and 88 हो गया. What's the observation of this? This is Saytzeff. Saytzeff means more substituted structure, where we get more alpha H. This is Hofmann. Corner से H लेके बना दिया. Is it clear? So this result or this table shows you clearly impact of base size on formation of different alkenes. Yes or no? Yeah. Vihan, is that clear? Arjun, Yuman, Jia, everybody. Yes. Please note down. Draw this table, note down this information, please. Draw this table, note down the information. What is it? It would lag. Your voice is not audible here properly. Please answer. Could you repeat what you just said about the smaller base part? I'm just saying the bases are becoming bulkier. Hofmann is becoming more. अच्छा, okay, got it. Hofmann मतलब ये वाला, Saytzeff मतलब ये वाला. Saytzeff जहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में कहीं आ रहा हो, Hofmann मतलब कॉर्नर पोजीशन पर. ठीक है. Smaller bases will give you Saytzeff. Bigger bases, bulkier bases will give you Hofmann. Bulkier bases and poor leaving group will go towards Hofmann. We have discussed these points, right? All right. Check the next example. Now I'm using different halogens. See the impact. If I'm using iodine here, I found the Saytzeff answer is 80%, bromine 75%, chlorine 65%, fluorine में 20% हो गया. Saytzeff answer. Whereas Hofmann option is almost 80% in fluorine. What does this prove? Can you understand that statement that you wrote a few minutes back? A poor leaving group will go towards Hofmann. A bulky base will go towards Hofmann. Arjun, Vihan, are you there, both of you? Yes, sir. So just 1 minute. Yeah. Can you just recollect that discussion which happened somewhere here? यहाँ पे भी आज किया हम लोगों ने discussion. ये वाले question. I just gave you a small write-up on this question. Can you recall? A poor, see this is F. So even if it is not that bulky, you will take H from here and make it this kind of structure, right? So just see the same thing is discussed here in this table. So even bulky leaving groups will give Hofmann only, right? Bulky leaving group. No. Bulky base I'm talking about. No, I'm not- so I'm saying generally like. Bulky leaving group से क्या problem है? वो leave करने दो ना. So isn't there also a rule that if the leaving group is bulky, it will be Hofmann, like if it's NMES or something? See, I'll see it at a different way. That the whole thing, the whole structure which was given you in N plus and something, that your substrate itself is bulky. I'll put it that way. Okay, don't call it leaving group. Say the substrate itself is bulky. ये तो टेबल आपको काफी क्लैरिटी दे सकती है मैकेनिज्म्स के बारे में. Yes or no? Can you just see these two tables? This gives you a lot of clarity about mechanism. Again, nobody is going to ask you the numbers कि मेरे को रट के बता दो 80, 20, 85, 70. कोई नहीं पूछेगा.
This is just to give you an idea which is high, which is low. Okay. So take it in that spirit. Don't try to remember the data. कि मेरे को पूरा रट लिया 12%, 20%, 18%, 60%. Nobody's going to ask you, right? But yes, you should understand what is the meaning of this. That's more important. Leaving group with poor leaving tendency and strong minus I always give Hofmann product. Note कर लीजिए. Very important line. Leaving group with poor leaving tendency, fluorine, and strong minus I always give Hofmann product. अब ये एग्जाम्पल आ गया. कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस. कौन सा एल्कीन बनेगा यहाँ पे? अब देखो इसको हीट करेंगे तो कौन सा एल्कीन बनेगा? 2 कार्बन का, 1 कार्बन का, या यहां से एल्कीन बना दो. कौन सा बनाओ एल्कीन? Everybody, which alkene? Minimum carbon alkene. Always remember when you do such reaction, minimum carbon alkene. Can we get carbon alkene of 1 carbon? एक कार्बन से alkene बनता है क्या? To form alkene, minimum requirement is 2. C2. C डबल बॉन्ड C तो होना चाहिए ना डबल बॉन्ड के लिए. तो ये तो रूल आउट हो गया. एक ही ऑप्शन है मेरे पास. कर लेंगे. So this is the answer. C2H4 plus this compound. I hope these things are well within your reach and understanding. So Reach it. in this cope elimination, is there always going to be an N plus? N प्लस हो सकता है, S प्लस हो सकता है. ओके, अलग अलग कंपाउंड शो करता है. कोप एलिमिनेशन कर लेंगे. एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स, एनी डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी. क्या बात है. तो जेई का एक हो तो एक दो क्वेश्चन और पूछ लो. चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ देता हूँ. हाँ मतलब पता भी चलना चाहिए ना कि कितना आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. कर तो बहुत कुछ रहे हो बट वो थोड़ा वैसा भी हो जाना चाहिए ना, रिजल्ट बेस्ड. चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप सभी को. लेट्स सी हु विल आंसर. ये वैसे कर लोगे, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है, बट फिर भी लेट्स सी. लिखिए x to y, x goes to y, x goes to y, work done by the gas is 10 joule. X goes to y, work done by the gas is 10 joule. Heat absorbed is 2 joules. लिख लिया. ये आए 2 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि परसों शाम का पेपर है. वर्क डन x to y by the gas is 10 joule, heat absorbed is 2 joule. For reverse process, heat evolved is 6 joule. For reverse process, heat evolved is 6 joule. Find out work done for reverse process. Find out work done for reverse process on the gas. कितना आता है? 14. Solve कर लीजिए. Work done by the gas negative होता है. W is -10. Heat absorbed Q is +2. So delta U निकाल लोगे. ठीक है, डेल्टा U is Q plus W. रिवर्स प्रोसेस का डेल्टा U कितना होगा? U1. So 14 is the So answer. 14 without. वो छोड़ो, रिवर्स प्रोसेस का डेल्टा U कितना होगा? U1. Sir, रिवर्स प्रोसेस का डेल्टा U. I think it was 8. So basically, yeah, it is reverse of the first one. No, x to y is, मान लो अगर x है तो उल्टा वाला -x हो जाएगा. बस वो वैल्यू लिखो और आंसर निकाल लो. कर लोगे? आंसर आएगा वर्क डन ऑन द गैस इज 14. ओके, इजी क्वेश्चन था. एक और क्वेश्चन लिखिए. हाइड्रोकार्बन हैज carbon hydrogen in mass ratio of 12:1. Hydrocarbon has carbon hydrogen in the mass ratio of 12:1. Each molecule of hydrocarbon has 2 carbon.
Each molecule of hydrocarbon has 2 carbon. Calculate amount of CO2 in grams produced by combustion of 3.38 grams of hydrocarbon. 3.38 grams of hydrocarbon. ये भी कल परसों शाम का पेपर है. 3.38 grams of hydrocarbon. करो. I repeat, weight ratio to 12:1 carbon hydrogen. Each molecule of hydrocarbon has 2 carbon. मास बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का. हाइड्रोकार्बन जो कंबस्ट किया that is 3.38 grams. Try to answer it. The carbon hydrogen So weight is is it 0.26 grams? कितना? 0.26. No. हाँ जी. the Sir, carbon 11 hydrogen. एक ही करके बोलो. So I got 11.44. Good. Answer 11.44. That's the answer. Yes, yeah. What's the Sir, question? I didn't get the question only the statement. Hydrocarbon has mass ratio carbon hydrogen 12:1. Each molecule of hydrocarbon has 2 carbon atom. CO2 पूछा हुआ है. Burn करो 3.38 ग्राम कार्बन. Sorry, हाइड्रोकार्बन. ठीक है. कैसे करेंगे? 12:1 वेट रेशियो. तो मोल्स रेशियो क्या होगा? 12/12 1/1 यानी कि 1:1. जैसे निकल गया 2 मोल्स कार्बन के पर मॉलिक्यूल. ओके. एवरी मॉलिक्यूल हैज 2 कार्बन एटम्स. सो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2. तो C2H2 कंपाउंड हो गए. कर लोगे. और C2H2 कंपाउंड हो गया तो इक्वेशन लिख लोगे. C2H2 plus 5/2 gives 2CO2 plus 2H2. कर लोगे ऐसे इक्वेशन. यस है ना? अब बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद आपको पूछा CO2 बता दो. कितना आ रहा है आंसर? चेक कर लीजिए. ट्राई. सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा. Let me get it. Solve. तीन क्वेश्चन तो आयनिक से पूछ लिए उन्होंने एक ही पेपर में. 3 questions from आयनिक. तो अगर आयनिक छोड़ के जाता है बच्चा तो फिर उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा फिर वहीं पे. You can't leave anything. Yes or no?
ये सेम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। Any answers? Sir, it's either first or fourth option. I'm not getting the final pH value. First one, what's the answer? Sir, I got like for in like the initial as 2, the initial pH as 2. I'm not getting the final pH. कोशिश करिए। So I got first option. You got first option. हाँ, that's correct answer. Good. यार निकलने चाहिए आंसर्स आपसे। ये तो मेंस का क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो एडवांस कैसे करोगे भाई? इजी तो क्वेश्चन है। कितनी आनी पढ़ने का फायदा क्या होगा फिर? So can you scroll up for the second question? So the second one's answer is first option. हाँ जी, आंसर क्या निकलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का? The second question is first option. सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। थर्ड भी कर लो। चलो इसको ऊपर ही ले आता हूँ। अब देखो क्या होता है, आइसोलेशन में क्वेश्चन करते रहना और फिर मतलब एग्जाम में करने में फर्क हो जाता है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। तीनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है। एच ए दिया हुआ है, के गिवन है आपको। विजिबल है ना जो मैं लिख रहा हूँ, या थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके So लिखूं the इसे? third one is third option. हाँ, थर्ड वन इज थर्ड ऑप्शन। कर लेंगे। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? आपने ये लिखा, वैल्यूज लिखी यहाँ पे, राइट? ओके, 20 ml ऑफ 0.2 मोलर एच ए, के गिवन है। NaOH के साथ रिएक्शन करो। एच एक वीक एसिड है, सो एच ए का रिएक्शन NaOH के साथ क्या देगा? NaA plus H2O. इजी। हाउ मच ऑफ एच इज देयर? 4 यूनिट्स, 20 to 0.2। हाउ मच ऑफ NaOH इज देयर? 2 यूनिट्स। तो रिएक्शन के बाद 4 - 2, 2 - 2, 2 2 मिल जाएगा। दिस इज सॉल्ट, दिस इज एसिड। कितना सॉल्ट? 2। कितना एसिड? 2। वीक एसिड and salt of weak acid with strong base is called buffer. Yes or no? Is it visible? Yeah. Is it buffer? At the later stage, is it buffer? Buffer का pH क्या होता है? Buffer का pH होता है, pH is pKa plus log of salt by acid। दोनों ही 2 2 है, तो ये तो 0 हो गया। pH is pK, K पता है आपको, so pK कितना हो जाएगा? 4 minus log of 5। log 5 यहाँ पे दे रखा है आपको 0.7, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3.3। 30 सेकंड का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं है। इनिशियल पीएच कितना होगा? हाफ ऑफ pKa माइनस log C। ये क्या हुआ? वीक एसिड का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ा आपने, C₀ को सॉल्व करके लॉग लगाओगे, हाफ ऑफ pK माइनस log C पढ़ा हुआ है। आंसर क्या होगा? हाफ pK इज 4 माइनस log 5 माइनस ऑफ log C। C इज हाउ मच? कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2। 0.2 कितना होता है भाई? 1/5 होता है। ये माइनस log 5 है, यहाँ से प्लस log 5 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाफ ऑफ 4:2 आ गया। इतना ही करना था। समझ में आया क्वेश्चन आपको?
So which answer you going to mark? 2 and 3.3. पहला solve हो गया. So second one is also first option. Second one first option. Good. Everyone comfortable in first part? First question. Second में क्या करोगे? H2S ऐड कर रहे हो HCl में. अब इसकी वैल्यूज तो देखो एक बार जरा. -8 और -13. भाई क्यों टेंशन लेनी इतनी? वैल्यूज इतनी खराब है. -8 -13 ना के बराबर K1 है इसका. Okay, if you write H2S breaks into H plus plus HS minus, they are looking forward for HS minus. Okay, this is point 1. Can I say with full confidence कि अगर XX होगा और अगर इसमें HCl ऐड कर दूं point 1, which is because of common ion effect or something, don't you think that X is very small in front of point 1? As per the data itself, see the numbers 10 power minus 8, 10 power minus 13. Yes or no? H2S decomposition क्या ही करेगा भाई? उसका value is 10 power minus 8, right? Very small value. So if that is the case, HS minus into H plus upon H2S is what? K1. K1 कितना given है अपने को? 8.3, 10 power minus 8. HS minus निकालना है. H plus is how much? 0.1 plus X. H2S is how much? 0.1 minus X. X का वैल्यू तो ना के बराबर है. 0.1 कैंसिल हो जाएगा. HS minus कितना आ गया? ये नंबर ही आ गया. Now just say, if this is the number in front of 0.1, can you add or subtract? Will it make any sense? No. Answer is what? A. Third question. Methane ruled out because methane तो टेट्राहेड्रल सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है. E ऑप्शन sp3d2 है. E हो नहीं सकता. जहां जहां E कैंसिल कर दो. ऐसे ही आ गया आंसर. कुछ करना ही नहीं. 10 सेकंड में नहीं लगेंगे. थोड़ा सा दिमाग चलाइए. पढ़ा है कि नहीं? XeF4 क्या होता है? व्हाट इज XeF4? XeF4 और SF4 कैसे मैच कर Square सकते हैं? planar. XeF4 is 2 lone pair, SF4 is 1 lone pair. XeF4 E ऑप्शन 3 जगह दिया हुआ है. उड़ा दो सीधे. सीधे आंसर 3 हो गया. 5 सेकंड लगेंगे इसको करने में. Remember, objective exam like JEE mains, which is just a qualifier examination, it is not the exam of selection, it's the exam of rejection. Okay? They So, but they SF want to remove useless students जिनको कुछ नहीं पता है, कुछ आता पता नहीं है, आके बस फॉर्म फिल कर दिया. ठीक है, उनको फ्री करने के लिए एग्जाम होता है. ठीक है, उनको चाहते हैं कि वो बाहर हो जाए, ना लिखें कुछ आगे. उनको फ्री करने के लिए एग्जाम होता है. इसका नाम है जेई मेंस. एडवांस एग्जाम क्या होता है? फर्दर स्क्रीन करता है वहां पे कि चलो इसमें से कौन काम के लोग हैं. ठीक है, किनको आईटी में भेजना है, किनको नहीं भेजना है, किनको एनआईटी भेजना है, किनको बिट्स भेजना है, किनको कहीं नहीं भेजना है. राइट, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन. इज इट क्लियर? So see the questions level, answers will always be in front of you. Your aim should be to filter out the correct option quickly. Remember, quickly. अब एक अप्रोच ये भी होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सर मैं तो पूरा सॉल्व करता हूँ. IF4 प्लस आई में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड है तो sp3d हो गया. अच्छा ये मैच करेगा. इसमें BrF4 BR में 7 इलेक्ट्रॉन -1 8 हो गए. 4 + 2 सो ये sp3d2 हो गया. ऐसे एक एक लिख के करने वाला जो होता है ना, टाइम वेस्ट करोगे आप. लुक एट दी ऑप्शंस केयरफुली. फटाफट देखो ऑप्शन में है क्या और सोचो कि किस तरीके से मेरा आंसर क्विकली आ सकता है. राइट, वो सारे आपको शॉर्टकट्स भी लेने पड़ते हैं कई बार. ओके, द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे इज नॉट द वे समटाइम्स. राइट, यू हैव टू बी वेरी शार्प, वेरी क्विक in solving these things. कर लेंगे ऐसे questions? Any issues, any difficulty in this part? So questions आप try कर सकते हैं इस तरीके के without much trouble. Coming back to the original discussion. Not this one. This is clear. Next, number of alkenes obtained on dehydrohalogenation. Try. Number of alkenes obtained on dehydrohalogenation. Sir, I'll be back in just a minute. Yes. So can we get 10 minutes break? Yeah, you can take quick 5 minutes break, 5 to 6 minute break. एक सेकंड. हाँ निकल जाओ. ठीक है, मंडे मिलते हैं. की किधर रख दिया आपने? हाँ ठीक है.
लोगों को आंसर आ गया? नंबर ऑफ एल्कीन्स ऑब्टेन्ड, आंसर आ गया? यहाँ Sir, I'm doing still. अरे अब शुरू कर रहा है. No. I was doing, but then I think I'm making some mistake. That's why I'm not getting answers. Fine. Arjun, Geo, answer. यहाँ you want. Yes. स्ट्रक्चर बना के आपको देखना कि तो सी मेजर माइनर की बात नहीं कर रहे हो, बोले भाई क्या क्या बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो देखो कितने वैरायटी ऑफ Sir, are we taking stereos also? नंबर ऑफ एल्कीन्स ऑब्टेन्ड. स्टीरियो लास्ट वाले में तो स्टीरियो भी चाहिए पड़ेगा. Yeah. ट्राई कर लीजिए. So basically 2-chloro-2-methyl butane. Let's say the first case. So butane बना लिया आपने, 2-chloro कर लिया, 2-methyl कर लिया. Now if you see, H can be taken from here or here. They are same, right? But this is different. So ये और ये दो वैरायटी हो गए. उसमें भी आप ऑप्शंस फिर फर्दर ज्योमेट्रिकल अगर पूछा तो वो भी आप मार्क कर सकते हो, निकाल सकते हो, कर लोगे, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसको एक बार ट्राई करेगा. Then rest is practice, 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 practice है. Now write on the heading Beilstein test. लिखिए फटाफट. What is Beilstein test? It's a test of alkyl halide, mainly chloride, on Bunsen flame. If you keep copper wire gauge, right, it gives green color. So mostly alkyl halides के केस में क्या होता है? Green color. क्लोरीन का टेस्ट है स्पेसिफिकली. ठीक है, देख लिया. यहाँ आर यू देयर? कहीं लंबे ब्रेक पे चले गए लोग. ओके, हॉफमैन रूल. बल्कि बेस में मिलेगा, अप्रोच फ्रॉम लीस्ट हिंडर्ड साइड, बेस कैप्चर्स H+ इन फॉर्म डबल बॉन्ड, जनरली E2. ये आपको पता है, बार बार लिख चुका हूं, बट इसको मैं समरी दे दी इसकी आपको. नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मिनिमम अल्फा H. ओके, तो इसका डिटेल वगैरह भी आप सारा कुछ कर चुके हो, उसके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए. पॉइंट बाई सारी चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, सो कहीं कहीं डिस्क्रीट पॉइंट से छूटे हुए, इसलिए सारा सम अप करते जा रहा हूं. Be little quick in writing these things. Yevan इधर है? Yes, sir, I'm writing. Neha is not there. Neha पता नहीं कहाँ गई. Sorry, sir. My headphone was attached, so I didn't realize. Okay. Quickly take a screenshot. अब आप screenshot लीजिए, because अब लिखने का टाइम तो नहीं मिलेगा इसमें ज्यादा. ठीक है, इसको फिर बाद में लिखिएगा. आगे बढ़ो. नेहा जी, Beilstein टेस्ट इज फॉर अल्काइल हैलाइड. क्लोरीन का टेस्ट होता है, ग्रीन कलर मिलता है कॉपर वायर पे हीट करने पे अल्काइल हैलाइड को. Hofmann rule, bulky bases, approach from least hindered side, base captures H+, form double bond, generally E2, no carbocation form, and less substituted alkene form होगी. ये सारे एग्जाम्पल आप कर चुके हो, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सब पता है आपको. ये सब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है. I'm just checking anything else which is not done. So before that, we hadn't written anything, right? No, nothing. Okay. That's it. So just tell me, we have done gem and vicinal, right? Already we have done geminal, vicinal कर चुके हो, PCL5 कर चुके हो आप लोग सारा. So congratulations, you have completed this topic. ठीक है, अब हम इससे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं.
तो ये टॉपिक के साथ साथ ऐसा नहीं कि ये टॉपिक ही किया मैंने, इसके साथ मैंने आपको ईथर भी करा दिया, अल्कोहल भी करा दिया, पूरा नहीं बट 40-50% ईथर अल्कोहल भी आपने कर लिया। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑफ एक्चुअल जे एग्जाम ऑन दिस टॉपिक। आंसर प्लीज, फटाफट स्पीड में करना, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेटिकली चल रहे थे। सबसे पहले किसका नाम आता है? ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ई फॉर ईहा, जे फॉर जिया, V for Vihan, Y for Yuan. In the same sequence, we'll answer. Everybody will get one chance. If you skip the answer, next person will pick up. Okay. So first question to A for Arjun. Iodine. Wrong answer. Most reactive पूछा है बेटा. Iodine कैसे most reactive होगा? So chlorine. Chlorine. Iodine तो सब least reactive होता है ना. Chlorine fastest Yeah, reactive 40%. होता है. Then bromine, then iodine. And fluorine is explosively reactive, we can say. Right? Clear, everyone? Don't try to note down the questions. I'll share the sheet. You can have a look at it later, right? Don't try to note down questions. Just try to answer. Participate in answering question. Is that clear, everybody? If you want to write something, write in short. Just write chlorine is fastest. That's all. Don't write the whole question. That will waste your time. I don't want that. Answer. A के बाद E. The compound prepared by action of magnesium on dry ethyl bromide in ether is known as which reagent? Grignard. Very good. Answer is Grignard reagent. RNGX. कर लोगे? Next question. J for Gia. Interaction of elemental sulfur with Grignard reagent gives. Elemental sulfur का मतलब होता है sulfur. Grignard is RX. Let's say RMGX. RMGX with sulfur क्या बनाएगा? बहुत difficult question आ गया इसके हाथ. RMGX with sulfur forms RSMGX. Note कर. Yes. And if you give it active hydrogen, it will become RSH. जैसे RMGX with active hydrogen becomes what? RH. Yes or no? So this will form RSH. RS minus will take H plus. Note कर लीजिए. I think this information can be new for others also. Clear? Vihan, clear? Yuvan, clear? So the question answer, just elemental sulfur RSMGX, and with hydrogen further, it becomes thioalcohol RSH. Next, vinyl chloride on reaction with dimethyl copper gives. Any idea? ये नहीं कर पाओगे वैसे, ये कर भी सकते हो. So does it react? Vinyl chloride on reaction with dimethyl copper. Question तो यही पूछा है हमने. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बनाने का फॉर्म. बेसिकली ये पॉलीमर, इसलिए बोला था नहीं कर पाओगे, इसको होल्ड कर लो, एक और मौका मिलेगा आपको. विहान जी. मेटाक्लोरोब्रोमोबेंजीन इज एन आइसोमर ऑफ मेटाब्रोमोक्लोरोबेंजीन. ट्रू और फॉल्स? True. Wrong. Why wrong? मेटाक्लोरोब्रोमोबेंजीन, They're मेटाब्रोमोक्लोरो. identical. ड्रॉ करके देखो. So they're the same thing. They're same thing. Yes or no? इसमें से एक आईपैक नेम गलत है बस. Next question to Yuvan. The reaction of vinyl chloride with hydrogen iodide to give 1-chloro 1-iodoethane is an example of anti-Markovnikov rule. Draw the structure. Don't give answer right away. Draw the structure first. The reaction of vinyl chloride with hydrogen iodide, CH2 double bond CHCl with HI, giving 1-chloro 1-iodoethane is an example of anti-Markovnikov. False. It's Markovnikov. Yes, it's Markovnikov, right? That way, right? And moreover, it is applicable to HBr, not for HI and HCl. तो वहीं पे rule out हो जाता है, ठीक है? Anti-Markovnikov ये किस पे apply होता है? HBr पे, right? HI HCl पे नहीं. Answer this question. ये नहीं कर पाओगे. Wait for it. ये भी नहीं कर पाओगे अभी. वैसे ये क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया इन्होंने, ठीक है? ट्राई करें क्या? ट्राई कर सकते हैं. टॉलिन विद क्लोरीन प्रेजेंस, ये कर सकते हो. ये तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, कर लो. हु इज आंसरिंग नेक्स्ट? ए फॉर अर्जुन. टॉलिन विद क्लोरीन FeCl3 के साथ.
टॉलिन का स्ट्रक्चर पता है, रिंग विद CH3, क्लोरीन FeCl3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, FeCl4 माइनस बनाओगे, So it will be ortho and para chlorotoluene. ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो। गुड, आंसर इज डी। कर ले, सभी को समझ में आया क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है? डार्क condition it goes to ring, light condition it goes to terminal position. Same question come with chlorine HNO, it will go to the terminal position, right? कर लोगे? So you'll be sharing this entire PPT, right? I'll share this also. Answer this question. A for then E. Best formation of C2H5Cl. सबसे ज्यादा C2H5Cl कब मिलेगा अपने को? This one. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, C2H5Cl, 1Cl is joining, others are not joining. So Cl limited amount में होगा तो अच्छा है, Cl ज्यादा होगा तो अच्छा है. Limited में. So which option you want? Sir, A. आंसर है सिंपल सा क्वेश्चन था. C2H5 C2H6 को एक्सेस में रख लो, Cl2 को लिमिटेड कर दो, so 1Cl ही ज्वाइन करेगा. If you take Cl2 in excess, it will join, like Cl2 is very much reactive, right? It will go and join everywhere, right? Sir, A और D में कंफ्यूजन है. D में भी वो सेम ही था. Next question, J for J. N-propyl bromide on treatment with ethanolic potassium hydroxide. आज ही किया है. Alcoholic KOH. N-propyl bromide. Propene. Very good. Answer is B, propene. कर लेंगे. Had it been aqueous KOH, then what is the answer? Aqueous KOH आंसर क्या होता? So प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल हो जाता है. ये अल्कोहलिक KOH है तो आंसर क्या होगा? प्रोपीन. कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, V for विहान. Yes, sir. The number of structural configurational isomer of bromo compound C5H9Br formed by the addition of HBr to 2-pentyne respectively are. थोड़ा सा दिमाग लगाइए तेजी से. स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब समझ में आता है आपको? स्ट्रक्चरल स्टीरियो पढ़ते हो ना, वो उसकी बात चल रही है. HBr एडिशन कर रहे हो C5H9Br पे. C5H9Br अनसैचुरेशन कितने होंगे भाई? C5H10 बोल दो इसको. 1 अनसैचुरेशन, 1 डबल बॉन्ड. 2 पेंटाइन से शुरू करना है और ये बनाना है. ट्राई करिए. ट्राई टू आंसर. So for configurational, is it E and Z? Which one? For configurational, we have to find E and Z isomers. हाँ बिल्कुल. वैसे क्वेश्चन विहान को दिया गया ना. लेट हिम आंसर फर्स्ट. So I got two structural. So which answer you'll mark? Sir, second option. Of course, अगर 2 स्ट्रक्चरल तो बाकी सब में 2 से कम है स्टीरियो, तो वही Yeah, so second option. So answer is 2 and 4. Basically, if you see C5H9Br, 2 pentyne is ये कॉम्पाउंड है. आप रिएक्शन करो इस पे HBr की, तो कैसे ज्वाइन होगा? ये 5 मेंबर्स हो गए. अब लेट्स से आई एम पुटिंग Br at here, right? H at this place, double bond. So this is the structure, right? What they're asking is now the number of structural and configurational isomer of a bromo compound this formed by addition of HBr to 2 pentyne. तो एक ऑप्शन ये बन सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैं इधर से बना दूं, The other side. ये बना दूं, हो जाएगा कि नहीं? अब इस देखो, see this is different group, right? So you can get cis and trans, or we can say ZNE here and ZNE here. कर लोगे? दोनों के अंदर ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज है. Everybody understood this question or not? Yes, sir. So what's the answer? 2 and 2 and 4. Answer will be 2 and 4. ठीक है जी, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर युवान. बहुत इजी आ गया. 1 chlorobutane alcoholic potash. So is it 1 butene?
1 butene. Why not 2 butene? Because how do I explain it? So Because see, beta elimination. chlorine is not that great leaving group. Your answer is correct, okay? 1 butene is better because had it been iodine, I would have drawn 2 butene, right? Remember, poor Beta leaving group is elimination. F, Cl is next to that. So 1 butene is better option. Kar lenge? Next question, A for Arjun. Chief, basically major product of the reaction between normal butane and this one, bromine is. Sir, A. हाँ भाई शॉक दे रहे मेरे को आज नॉर्मल ब्यूटेन एंड ब्रोमीन ए कैसे बनेगा भाई 1 डिग्री कैसे बना दोगे ब्रोमीन से Oh, sir, 1 minute. ब्रोमीन रिएक्टिविटी इज 182 1600 रिमेंबर 1 रेशियो 82 रेशियो 1600 फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो कौन सा बनना चाहिए Sir, 3 degree. 3 तो है ही नहीं 3 तो बन ही नहीं पाएगा Sir, अब 2 degree. कौन सा वाला बनेगा 2 डिग्री कौन सा आंसर ठीक लग रहा है Sir, B. हाँ Sir, for C and D, won't you need excess? हाँ so answer is B for Bombay good you're getting B Yes. answer is B next question E for Iha isobutyl magnesium bromide with dry ether ethyl alcohol isobutyl क्या होता है भाई isobutyl हाँ okay isobutyl is this magnesium bromide MgBr ऐसा स्ट्रक्चर हो गया dry ether ethyl alcohol is this does it have active hydrogen OH अल्कोहल का H एक्टिव होता है जब वाटर का ले सकता है अमोनिया ले सकता है अल्कोहल ले सकता है किसी एसिडिक कंपाउंड से ले सकता है H this is a C minus so what will happen C minus will take H which answer is correct हाँ Just 1 minute. So I'll have to write it down 1 minute. लीजिए लिखिए take your time Sir, is it B? B or D So D is also there. B और D में कोई डिफरेंस है It's fine. It is fine. Can I say B and D are same only? Check. Yeah, they're same. So any of them you can mark, no? They give an answer B, but D can also be marked. Next question. Was it multiple choice? No, there's some typing stuff. Next question. E के बाद आता है J. J for Gia. बताइए. CH3 whole thrice CmgCl. Grignard बना लोगे आप C minus. D2 is like deuterium. Okay, D2 जैसे water होता है वैसे D2. So H की जगह पे D है इस बार. क्या आंसर होगा? Which one? will it be A? You're not audible, Jia. So will it be A? Yes, answer is A. Very good. C minus MgCl. D ले लो. CD बन गया. इतनी सी बात है. ये तो पिछले क्वेश्चन में जैसा ही हो गया ना ये वाला क्वेश्चन जो किया सेम ही चीज होगी. आंसर इज A. कर लोगे? देखो जेईई के क्वेश्चन है सारे इस टॉपिक के. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन आएगा नेक्स्ट? V for Vihan. I'll just get water. हाँ जी 2-chloro-2-phenyl ड्रॉ कर लोगे. वो प्लस का क्या मतलब है? दैट प्लस इज द ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव नेगेटिव RS DL जो फॉर्म्स होते हैं राइट. एक वर्ड यूज किया है इंटॉलरेंट रेसमाइजेस slowly in presence of small amount of SbCl5. What SbCl5 can do? So a small review, if it is E plus PCl5 getting Cl So minus. does it take the chlorine and it makes a carbocation? Yes, very good. Answer is D. It forms a carbocation. So this chlorine you can take, you form a carbocation, and that carbocation, remember SN1 reaction. This carbocation attack front, attack back, you can get like retained and inverted structures.
which is also known as racemization. किया हुआ है आपने? रेसमाइजेशन पढ़ा हुआ है, लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था सब कुछ, रिवाइज करिए। रेसमाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, गुड डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट, राइट, डाइलेक्ट्रिक पावर ऑफ सॉल्वेंट शुड बी हाई, ये सब कर चुके हो। ओके, सॉल्वोलाइसिस वाला क्वेश्चन याद है, रिमेंबर? ये सब किया हुआ आपने, एक बार रिवाइज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज आंसरिंग दिस? Me. बताइए। For the set of reactions XML for CS to BR, with X gives पहले आपको x मिल रहा है, फिर x से प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर जो बन रहा है उसको उससे रिएक्शन कर रहे हैं, तो फिर ये बन रहा है। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? फर्स्ट एलिमिनेशन हो रहा है, आई थिंक सेकंड एडिशन हो रहा है। yes, so the first one will be dehydrohalogenation. करेक्ट, व्हिच वन यू विल यूज? So, I'll use NaOH. I think I'll use it is alcoholic NaOH at 80 degrees Celsius, high temperature. Elevator. So you get propene, Oh. and then to get Br, you would use HBr, and you need it at here. So do we have to use Markovnikov rule? आप सोचो, बिहार तो बीच में आ रहा, तो मार्कोनिकॉफ भी हो रहा है। Yeah, so then it will be second option. गुड, आंसर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट एलिमिनेशन देन एचबीआर। देखो एलिमिनेशन किससे होगा? एल्कोहलिक एरोवेज, इसकी इसकी मदद से आपने एलिमिनेशन कर ली, एंड एचबीआर लगा के आपने बीआर दे दिया, कर लोगे, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस लास्ट वन? चलिए नेक्स्ट का आंसर ए फॉर अर्जुन। So it will be dehydration, right? The alcohol group will get removed. करेक्ट, OH2 प्लस चार्ज फॉर्मेशन, वाटर बाहर गया, डबल बॉन्ड इधर बन सकता है। So does it include stereo? एंड पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एफ आर पॉसिबल। एफ आर पॉसिबल, इसके स्ट्रक्चर्स पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पे लिखा है 5 such products are possible when you react with bromine. So decide. वाटर रिमूव्ड प्लस Oh, it will, डबल बॉन्ड इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो, है ना? yes. ओके, अब आपको कौन सा चूज करना है? वी हैव टू डिसाइड। इफ यू गो विद दिस ऑप्शन ऑफ डबल बॉन्ड, जस्ट हियर मी आउट, फिर आप Br2 से रिएक्शन करोगे, तो क्या आपको 5 ऑप्शन बन सकते हैं कभी? No, sir. So just, तो कौन सा वाला यूज करना चाहिए मेरे को? ये वाला? yes. तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एफ आर पॉसिबल? Uh, एक्चुअली वो आप सारे कंसिडर करवा रहे हैं। एक्चुअली वो क्या हो रहा है, एफ के कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं और उससे टोटल इतने सारे ऑप्शन हैं, तो आप कुछ भी रूल आउट मत करो, यू फॉर्म ऑल द पॉसिबिलिटी। आप बताओ। so then it will be 3, right? ओके, वाई 3? वन इज So, डबल बॉन्ड कॉर्नर, अदर 2 आर so cis and trans. वेरी गुड, कर लेंगे। सभी को समझ में आ रहा है क्या हुआ इसमें? एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दी तो भाई इसमें सिस ट्रांस तो मिलेगा नहीं, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दी, इसमें सिस ट्रांस मिल सकता है ना? ओके, तो आप ऑप्शन मार्क कर लोगे। आंसर इसका दिया है डी, डी यानी कि 3, बिल्कुल ठीक आंसर निकाला इसने। ठीक है, अब Wait, उसके so बाद how 3, sir? Cis and trans will get 2, and the third one? थर्ड वन इज डबल बॉन्ड हियर, टर्मिनल, ये वाला। Okay. ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, 3। आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, एग्जांपल कहाँ से आ गया? ये कुछ मिसिंग है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका नंबर है? ए के बाद आता है, बताइए कौन सी रेशियो है ये? मेटालिक सोडियम ईथर और हैलाइड गिवन है, कौन सी रेशियो है? हाइड्रोकार्बन में पड़ी है रेशियो। So Anyone Wurtz else? reaction. वुड्स रिएक्शन, भाई ये सब तो पता होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन हो रही है, वुड्स रिएक्शन में क्या करते हो? रेडिकल बना के क्लब कर सकते हो, रेडिकल बना के क्लब कर सकते हो, यस नो? रेडिकल बना के क्लब कर दो। व्हाट्स द आंसर? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, उधर पे ब्रोमीन है, इधर पे क्लोरीन है। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, चेक करिएगा नोट्स में। इधर रेडिकल क्लब, तो क्या बनेगा? और तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी हाँ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल। So will it be C? हाँ, C. फिर ध्यान से देखो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल, इसका एच Oh, so will it be? No. pH minus is this thing, H मिल गया तो क्या बन गया? P no. PHH. What is PHH called? Benzene. So Benz. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया बेंजीन? ओके, ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन है, बेंजीन बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहान, बीआर हटा के, ये तो हाइड्रोकार्बन में करा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट आना चाहिए। So second option. वेरी गुड। अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2। क्यूएच से एक HBr उड़ाओगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगली बार HBr उड़ाओगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कर लेंगे? यस अर्जुन, युवान, Yes, sir. कंफर्टेबल? नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, युवान, अच्छा क्वेश्चन आ गया इसके पास। मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, NO2 is there, F is there. Now see the question carefully. 1 minute, sir. Let me solve it. We are here. This is PHS minus 2008 में आया हुआ है। Sir, it will be SN2, I think. Tell me which option. So I'm not sure between first and second. See, first and second, FnO2 is intact, Yeah, and you are replacing Br. yeah, Attack should happen from backside, so Br should be out, right? yeah. So it Oh, should be second SPH. option. ये वाला option हो सकता है, ठीक है? If you Yeah, go with that logic. In one of the cases, you will find that they are using SPH but towards you. अब towards तो नहीं होना चाहिए ना? Towards you Br की तरफ तो नहीं आ सकता। yeah. और इसने SPH यहाँ भी चेंज कर दिया, यानी कि इसने SN2AR भी कर ली, and meta position NO2 will help you in doing this, right? But Yes. see, this option is again having SPH towards you, right? तो Is- इनमें से आपके डाउट बन सकते हैं. Decide your answer, which one? Sir, it'll be A or B. I'm getting little. Answer is A. कर लोगे? Yeah. ठीक है, good. Next, aryl halides are less reactive. Whose chance is this? A for Arjun. Yes. More than one options may be correct. बताइए. Less reactive towards nucleophile substitution reaction as compared to the alkyl halides due to what? So A and B is correct. पक्का? Yes, sir. Sure? Yes, sir. A and? Sir, no, I'm thinking of the others. I've not read the others. Okay. Tell me the final numbers. So I think it's A, B, and D. Okay. Can I lock this answer? Yes. Answer is B and D. Sir, but won't A also be correct? Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halides due to. Okay. Yeah. So aryl halides are less reactive towards this as compared to alkyl halides due to. तो aryl क्यों reactive कम है? The formation of less stable carbonium ion. भाई aryl में कार्बोनियम बनाते हो क्या? पहली बात. No, sir.
So why do you want to mark the option, right? Sir, but don't you not make it because it's a bad carbonium? But is this the reason of carbonium ना बनना reason है? मैं तो कह रहा हूँ उसका main reason क्या है? इसका main reason है ये चीज, partial double bond character, right? Yes. Partial double bond character is the main reason, key reason. Okay. And resonance stabilization of the whole structure is another reason, right? So they have given the answer B and E. Resonance, long carbon hydrogen bond is wrong because it's a short bond actually. It's not long, it's short. Okay. Inductive effect is also not the logical reason. sp2 hybridized carbon attached to halogen is the reason. Because that is having a double bond character. Yes or no? If you have this structure, see, this is sp2 hybridized. Basically, they want to say with this line vinylic hydrogen, vinylic position. Okay. So why would Then- A not be in the options? Because see, carbonium ion formation is not the case for what do you call aryl at all, right? And alkyl halide also, there are alkyl halides which are, let's say CH2X की बात कर लो, इसमें तो कहाँ, इसमें भी तो नहीं बनता कार्बोनियम, CH2 Okay. CH2 में भी तो नहीं बनता कार्बोनियम, तो वो Got कोई it, got it. करेक्ट लॉजिक नहीं हुआ ना. Next, answer this question. Where can be found? Answer. Just one Cl2. So is the answer C? Answer is C. Very good. Okay. देखो SOCl2 का कुछ लेना देना नहीं है इससे, NaOCl का कोई लेना देना नहीं है. SO2Cl2 आपका नॉर्मल एल्केन्स में काम करता है, आपको टॉल्यून वाली पोजीशन पे चाहिए Cl, so Cl2 is the best. Cl2 H लिख दो तो और अच्छा होगा. डन कर लोगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट है तो क्या ही कराएंगे आपसे. ठीक है, ठीक है. देन डन फॉर द डे, राइट. इस पे एक बार डिस्कशन करते हैं हम लोग फर्दर. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? टेक 2 minutes टाइम, revise the whole class quickly. Okay. So can you send these notes on the group, the PDF? Yeah. So the Beilstein test part that I had missed, could you just tell about that once? Based on The Beilstein test, I missed that part. Could you explain? which part you missed? So the test, alkyl halide, right after the break. Beilstein test is nothing but like green color once you heat the alkyl halide with copper wire. That's all that's there. Correct. Yeah, that's all. Okay. Okay. एक बार और चेक कर लीजिए सारी चीजें जो भी आज की आपने. Start solving questions on this topic now. Okay, there may be few things here and there. I'll also request you to first go through NCERT quickly. NCERT में कुछ रिएक्शंस एक बार फटाफट देख लोगे तो और इजी हो जाएगा. NCERT कर लो, सारे नोट्स रिवाइज कर लो, इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लोज करने की कोशिश करो. So next 2-3 days, please work upon this topic. Okay? कर लेंगे? All right. Any questions? Anyone? Any doubts? ठीक है. ठीक है, देन इसको फिर फर्दर अटेंड करते हैं. लेट्स मीट ऑन मंडे देन. ओके, मंडे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी. जी हाँ, नेक्स्ट विल बी ऑन मंडे फॉर केमिस्ट्री. फिजिक्स की लेकिन आपकी कल क्लास होगी विहान के साथ. सर विल अपडेट यू. ओके, एक बार आप आशीष सर से कनेक्ट कर लो. विहान, यू अटेंड द क्लास. जिया, यू आल्सो अटेंड द क्लास. आप कोशिश करो कि अटेंड कर लो आज. यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 2-3 minutes, 5 minutes, बट अटेंड द क्लास. और बाकी आप सर से एक बार डिस्कस कर लो, क्योंकि वो फिर अगर पूरे साल वैसा टाइम जा रहा है, सो बेटर दैट यू अटेंड दिस वन. It'll be easy for you, right? Weekdays you'll get time there. Yeah. Anuj Sir. हाँ जी. So what about my physics class today? I had physics from 5 to 7. आपको भी इसी बैच में शिफ्ट कर दिया जाए, बेस्ट हो जाएगा, है ना? So फिजिक्स but भी आप भी इसी में कर रहे हो ना? फिजिक्स अलग से क्यों करना चाहते हो? मेरे सर से डिस्कशन नहीं हुआ था. no, but I would have missed full of capacitors, no sir. वो सर से अलग से करा देंगे आपको, डोंट वरी. ओके, बट ट्राई टू सिट इन दिस क्लास सो दैट यू कैन एट लीस्ट लाइक गो अहेड विद दिस, राइट? तो वो जो बीच में गैप है वो फिल कर दिया जाएगा. Okay, sir.
Done. Arjun, you are not attending in this batch, right? Physics? So, Or you also? because sir is still doing a topic, once he finishes, then even I'll start attending. Okay, okay. So Bye. he said next week he let me know. ठीक है, ठीक So है. Monday onwards, you start a new chapter. I will do more questions. Monday onwards, we'll do next chapter first. Okay. We'll start physical chemistry topic first, right? पहले मैं थोड़ा ऑर्गेनिक करा दूँ सीक्वेंस में, but because of multiple phase, multiple जगह अलग अलग चल रहा है, तो मैं solution colligative सोच रहा हूँ. Solution colligative आपका शुरू करा दूँ या कोई और टॉपिक शुरू करा दूँ, and then वापस से organic. So, or what way you want? You want alcohol phenol ether in the continuation? तो organic खत्म हो जाए, फिर physical. Others? Physical first. Sir, do physical, sir. Okay, because see what I observe is I can finish everything at one go, but आपको अगर टाइम नहीं मिला उसको सॉल्व करने का तो कोई पॉइंट नहीं है, तो वो मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, आपकी तरफ से पेंडिंग रह जाएगा. Okay, so better option is that you get some time, breathing space of 10-12 days, do other topic of physical chemistry. By the time we come back to organic again, you have completed this topic properly. That's the idea. Get the point? तो अदरवाइज क्या होगा, मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर फंस जाओगे. सो एक वहां पे डिस्क्रीट टॉपिक कर लो, सॉल्यूशन क्वालिटेटिव छोटा सा टॉपिक होता है वो खत्म करो. मीनवाइल आपको पूरा एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया जहां पे आप पूरा अल्काइल डिफरेंट सोर्सेज से खत्म कर दो एंड डाउट बाउट डिस्कस करके क्लोज कर लो. जब सॉल्यूशन होगा उस समय पे आप जब इधर ऑर्गेनिक वापस से दूसरा चैप्टर शुरू होगा तब सॉल्यूशन को फटाफट खत्म कर लो. इस तरीके से आपकी चीजें पैरेलल में चलती रहेंगी दोनों, अदरवाइज ब्लॉक हो जाएगा एक पार्ट में, ऑर्गेनिक ही कर पाओगे. ओके अर्जुन, योर स्कूल दे आर डूइंग बोथ, राइट? Sir, Physical is also being done in your school? sir, they've not done organic, only physical. They have done only physical. Okay. Sir, like they finished the first, they finished this topic like very fast. Solution colligative? No, haloalkanes. That is organic, no? Sir, like they finished that chapter, now they're doing physical. But that's what. So they are doing physical and organic both, right? If I understand. Yeah, yes. Yeah, correct. ठीक है. But you're understanding everything, right? Yes, sir. ठीक है. Okay, everyone. See you in the next.